Welcome to our class Deep Insights. So today we are discussing about today ରହୁଛି plus 3 second semester education honors major 1.4 unit IV ରହୁଛି ଯୋଉଥିରେ କି ରହୁଛି approaches and methods of teaching. ତ approaches of teaching ଆମେ first discussion କରିବା then ତାପରେ methods of teaching କୁ discussion କରିବା. ତ approaches of teaching is a very complex process. The teaching process involves major problems of teaching which is solved by approach of teaching. তাহলে teaching is a very complex process. ତାହଲେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜଟିଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା. The teaching process involves major problems of teaching. ତାହଲେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହୁଏ ତାକୁ କେମିତି ସଲ୍ଭ କରିବା कहा द्वारा हमें सॉल्व करता हूँ अप्रोचेस ऑफ टीचिंग द्वारा ही हमें सॉल्व करता हूँ जोटा कि टीचिंग शिक्षादान संबंधित समस्या गुड़िकर समाधान होता है. तो an approach is considered as an idea and action for attacking on a problem. ताले approach होची कोन? Approach is considered as an idea. ताले गोटे idea होची approach होची गोटे idea और action for attacking on a problem. ताले ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ତାର ସମାଧାନ ଗୁଡିକ ଆମେ approach ରେ ପାଇଥାଉ. The process of teaching is problem as well as a situation to deal with properly by the help of different approaches. There are various approaches to teaching which the teacher adopts in the classroom to make his teaching effective and successful. ताले there are various approaches to teaching. ताले various approaches रहुची teaching by which the teacher adopts in the classroom. जोड़ा कि शिक्षक श्रेणी गृह रे apply करथांती बा ग्रहण करथांती सेही पंथा गुड़िको. तो पंथा गुड़िको आमे देखिबा जहा द्वारा कि निजर शिक्षादान को इफेक्टिव और सक्सेसफुल करिथांती. तो सेही approaches गुड़ा देखिबा. There are approaches. These approaches are subject centered approach, teacher centered approach, learner centered or child centered approach, activity centered approach. ताले approaches रहउची चारि प्रकार रो. गोटे होची subject centered approach, आ गोटे होची teacher हला subject को गुरुत्व दिया गला तबले ताकू हमें सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच गुरिका कहले. आ टीचर सेंटर्ड अप्रोच होची जेतबेले शिक्षकक ऊपर सेंटर रे रहिले शिक्षक केंद्रिक हला शिक्षादान जेतबेले दिया हला ताकू हमें टीचर सेंटर्ड अप्रोच कहूचे. देन आछि लर्नर सेंटर्ड और चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच. ताले जेतबेले शिक्षार्थी ऊपर गुरुत्व देला शिक्षार्थी जेतबेले केंद्र रे रहिले सेतबेले ही हला एडा लर्नर सेंटर्ड और चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच. तापर आछि एक्टिविटी सेंटर्ड अप्रोच. एक्टिविटी होची जेतबेले कार्यकलाप बा क्रिया ऊपर जेतबेले गुरुत्व दिया गला अंशग्रहण बोथ आ शिक्षक आ शिक्षार्थींकर एक्टिव पार्टिसिपेशन ऊपर जेतबेले गुरुत्व दिया गला तो सेतबेले सेटा हला एक्टिविटी सेंटर्ड अप्रोच. तो at first we discuss about subject centered approach. In the subject centered approach the focus is on the subject matter. ताले subject centered approach रे हमें focus करथाउ कापरे subject matter ऊपरे हला. तो teacher strictly follow the syllabus. ताले एटी शिक्षककर भूमिका कोन थाए से strictly syllabus को follow करंती and textbook both for teaching and learning. हला शिक्षादान और शिक्षण पई syllabus पाठ्यक्रम को strictly follow करतानी माने कि जहाटा शिक्षादान दिया जियो बा शिक्षण प्रक्रिया टी केमती होबो जे syllabus according to syllabus आ टेक्स्ट बुक को नै कि पढा जिवो हला. आ अन्य आ जा सब नॉलेज रहला बाहर बय माने syllabus बाहर नॉलेज एते तापर गुरुत्व दिया जिवो ने सब्जेक्ट सेंटर्ड ऊपर सब्जेक्ट बा syllabus ऊपर अधिक गुरुत्व दिया जिवो आ टेक्स्ट बुक रे जा रहइबो ता ऊपर गुरुत्व दिया जिवो. तो all classroom activities are textbook center. ताले क्लासरूम रे एक्टिविटीज जुडा केमती रहइबो टेक्स्ट बुक समस्त पाखर टेक्स्ट बुक रहइबो टेक्स्ट बुक रे जा क्वेश्चन आंसर रहइबो हला से हिसाब रे टीचिंग और लर्निंग टा हबो. तो all classroom activities are textbook centered.
टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस आर यूज्ड फॉर इवैल्यूएशन पर्पस ताले मूल्यांकनटा टेक्स्ट बुक रे जो क्वेश्चन आंसर रही तारी उपरे ही बेस हेकी रहिबो। तापर होची सेकंड रे आछी टीचर सेंटर्ड अप्रोच। इन टीचर सेंटर्ड अप्रोच द टीचर डोमिनेट्स all the classroom activities। ताले टीचर सेंटर्ड अप्रोच रे कोन हुए इन टीचर सेंटर्ड अप्रोच द टीचर डोमिनेट्स ऑल दी क्लासरूम एक्टिविटीज। ताले शिक्षक जहाँ कही शिक्षक रोलटा एटी डोमिनेंट होता है हला जहाँ शिक्षक कहे श्रेणी गृह रे सही कार्यकलाप गुड़िक हेबो। तो एवरीथिंग दैट इज डन इन द क्लास इज टू बी डिसाइडेड बाय द टीचर। टीचर जहाँ कहे से ही हबो। तो इन दिस अप्रोच फोकस इज ऑन टीचिंग रादर देन लर्निंग। ताले एटी लर्निंग ऊपर एते फोकस दिया जाए नाही किंतु टीचिंग मेथड ऊपर अधिका फोकस दिया जाए माने टीचिंग टा इफेक्टिव हवा दरकार लर्निंग हला ना नाही तापर एते इंपोर्टेंस दिया जाए नाही कोन पई ना एटा होची टीचर सेंटर्ड अप्रोच। तो टीचर को ऊपर गुरुत्व दिया जाए माने टीचिंग ऊपर गुरुत्व दिया जाए और लर्निंग ऊपर एते गुरुत्व दिया जाए नाही। देन थर्ड रे आसुची लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच place the child at the center of the classroom process learners developmental stages learning style cognitive skills prior knowledge experience motivation interest personality are taken into account। Child centered approach aims at all round development of children। It regards education as the fundamental rights of every child। ताले लर्नर सेंटर्ड अप्रोच माने एटी शिक्षार्थी को केंद्र करिकी टीचिंग अप्रोच टा रही। तो चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच प्लेस द चाइल्ड एट द सेंटर ऑफ द क्लासरूम। ताले शिक्षार्थी को द्वारा सबुतिक कार्यकलाप करा जिवो आ टीचर एतरे खाली गाइड रहिबे हला। ताले लर्नर डेवलपमेंटल स्टेजेस लर्निंग स्टाइल्स हला ताले एठी लर्निंग ऊपर जेम टीचर सेंटर्ड रे टीचिंग ऊपर गुरुत्व दिया होची लर्नर सेंटर्ड रे हमें लर्निंग ऊपर गुरुत्व देबा। तो लर्निंग स्टाइल हला से पिलाटी को हिसाब रे पढिया को चाहूची हला सेही माध्यम रे ही शिक्षा दानटी हेबो। आ कॉग्निटिव स्किल्स पिलार कॉग्निटिव स्किल्स ऊपर भी गुरुत्व दिया जाए। तापर प्रायर नॉलेज जहाँ थिबो से हिसाब रे ही आगु को टीचर पढेबे। आ एक्सपीरियंस पिलाटर एक्सपीरियंस कोन अछि तो पिलाटी को ऊपर गुरुत्व दिया जो हला। तो लर्नर ऊपर गुरुत्व दिया जो लर्नर जो हिसाब रे कहबो से हिसाब रे पढ़ा जिवो आ टीचर ताको मोटिवेट करि परिबे। तो मोटिवेशन कथा लेखा अछि इंटरेस्ट पिलार इंटरेस्ट जो थिबो से पढ़ाबो। आ पर्सनालिटी पिलार पर्सनालिटी को असेस करा जिवो आ टेकन इनटू दिस अकाउंट। ले अकाउंट रे ये सब रहउची कोन रहउची जे डेवलपमेंटल स्टेजेस लर्निंग स्टाइल्स cognitive skills prior knowledge experience motivation interest personality are taken into account। ताले child centered approach aims at all round development of children। ताले पिलाटी रो all round development कथा जतबेले चिंता करा गला सेटा होची child centered approach रो एम होची लक्ष्य होची सेया पिलार all around development। तो it regards education as the fundamental rights of every child। ताले प्रत्येक शिशुंकर फंडामेंटल राइट्स होची एजुकेशन बोलिका चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच रो लक्ष्य रे चाहूची से कथा। देन आछी एक्टिविटी सेंटर्ड अप्रोच। एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच adopted by teacher to emphasize his or her teaching through activity। Activity gives reality for learning। It develops good relationship between students and teachers। ताले activity centered approach रे कोन जाउची जे activity based approach adopted by teacher to emphasize his or teaching through a activity। ताले activity बा कार्यकलाप द्वारा जेतबेले शिक्षादान दिया जाए सेतबेले ही टीचिंग टा बहुत इफेक्टिव होता है और लर्निंग बहुत इफेक्टिव होता है। आउ जदि डे टू डे लाइफ सहित सेटा जड़ित रहिला कोटा टीचिंग टा और लर्निंग टा ताले सेटा आहुरी इफेक्टिव होता है। तो एक्टिविटी कथा दले कार्यकलाप रे
ଯେ ବୋଥ୍ ଟିଚର ଆଉ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। କୋଉଟା ଆକ୍ଟିଭିଟି ସେଣ୍ଟର୍ଡ ଆପ୍ରୋଚ୍ ହେଲା। ତାହେଲେ ଟିଚରଙ୍କର ଟିଚିଂରେ ଆକ୍ଟିଭିଟି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମାଧ୍ୟମରେ ହବ ବୋଲିକା ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆପ୍ରୋଚେସ୍ ଅଫ୍ ଟିଚିଂ। ତା ଦେହରେ ଯାଉଛି ସବଜେକ୍ଟ ସେଣ୍ଟର୍ଡ, ଟିଚର ସେଣ୍ଟର୍ଡ, ଲର୍ଣ୍ଣର ଆଉ ଆକ୍ଟିଭିଟି ସେଣ୍ଟର୍ଡ ଆପ୍ରୋଚ୍। ତ ସେସବୁ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଡିସ୍କସନ୍ ସରିଯାଇଛି। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥିଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।